Hello my dear children, I welcome you all to computer class. So we are on lesson 1, computer hardware and software. In the previous session we have learned and read the first part of the chapter. We are going to read the chapter in 3 parts. Today we are going to understand the second part of this chapter. So let's start the class. We have read till the hardware in the previous session. Today we will read about the 3 categories which comes under CPU. The first one is input devices. Input devices allow us to send information to a computer. Okay, so what are input devices? Those devices which allow us to send information to a computer. So those devices are called input devices. The first one you can see is keyboard. A keyboard is used to type letters, numbers and commands. Okay, so with the help of keyboard we type letters, numbers and commands. In this way, keyboard sends information to the computer. So it is an input device. The other one is mouse. Okay, you know mouse is called pointing device and it has generally 2 or 3 buttons. Yes, mouse is also an input device. A mouse is used to point at a desired location or select an option on the computer screen. It is also used to drag and drop or draw something on the screen. So, mouse is also an input device because through the mouse, with the help of mouse, we select an option on the screen. We also point any icon or any option on the screen. When we want to drag and drop or draw something, we use mouse. So through these activities, mouse send information to the computer. So mouse is also an input device. The next one is a microphone. A microphone inputs sound data into a computer. It is used for recording sounds. So whenever you want to record your sound, you can use microphone. So microphone is an input device because it helps in sending sound data into the computer, sound information. So it is an input device. The next one is a scanner. Scanner is a device which scans the files. So it is also an input device. A scanner converts paper documents and pictures to image files on a computer. Scanned files on a computer are called soft copies. So with the help of scanner, we can scan our paper documents and pictures and can save them to image files on a computer. Then the scanned files, जो scanned files होती हैं, जो save होती हैं computer में, उनको हम क्या बोलते हैं? Soft copies. Yes, soft copies. So scanner is also an input device. The next one is a webcam. A webcam is a camera connected to a computer that is used to take pictures and videos. It is used for video chatting. So, a webcam is also an input device. You must have seen a webcam connected to your computer. Yeah, with the help of webcam, we take pictures and videos. So, webcam also send information to your computer through pictures and videos. So, webcam is also an input device. So, we have learnt 5 input devices. We have learnt about 5 input devices. The first one is keyboard, mouse, microphone, scanner and webcam. What are input devices? What are the function of input devices? Input devices are those devices which allow us to send information to a computer. So we have learnt about 5 input devices. Now look at the yellow column, yellow box. The first computer mouse was made of wood. Yeah, this is an amazing fact. The first computer mouse, जो पहला computer mouse बना था, it was made of wood. वो लकड़ी का बना था. Now, let's start the other topic, output devices. Output devices allow us to receive information from the computer. Output may be printouts from the printer, sound from the speakers or images on the monitor or projector. So, what are the function of input devices? It sends information to a computer, but output devices receive information from the computer. And the information received can be in the form of printouts from the printer,
sound from the speaker, or images on the monitor or projector. So let's start learning about them. The first one is a monitor. You must have seen a monitor at your homes or in computer labs. Yeah. What is the function of monitor? Monitor का क्या काम है? A monitor displays information on the screen. Okay, so whenever we search for any information, it gets displayed on the monitor. So monitor is also an output device because it is receiving information on it. The second one is speaker. Speakers play sounds and music on a computer. So speaker is also an output device because it is giving us the information in the form of sounds and music. जब हम स्पीकर ऑन करते हैं तो हमें साउंड म्यूजिक सुनाई देता है. यस, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा है? इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स एंड म्यूजिक टू अस. सो स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. द नेक्स्ट वन इज a printer. A printer is used to print text and pictures. Any text or picture printed on a paper is called a hard copy of the text or picture. So आप सभी ने प्रिंटर देखा होगा. जब भी हम किसी पेपर को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने देखा है एक पेपर निकलता है, एक प्रिंटेड शीट निकलती है फ्रॉम द प्रिंटर. यस, दैट प्रिंटेड शीट is called hard copy of the text or picture. It is called the hard copy. This अभी हमने पढ़ा the scanned files which get saved in the computer in the form of image files. So scanned files are the soft copies and printed files, printed papers are called the hard copy. Okay, so printer is also an output device. Next one is projector. A projector displays videos, pictures and documents and other computer data on a big screen so that many people can watch it together. Okay, so आपने अपने स्कूल में AV देखा है? Yes, आपने देखा होगा AV. जब मैम आपको AV दिखाती हैं, have you seen? वो क्या करती हैं? She switches on the projector first. आपने देखा होगा आपकी क्लास के सीलिंग पर एक वाइट या ब्लैक कलर का प्रोजेक्टर लगा है. मैम एवी जब आपको दिखाती हैं तो आप उस प्रोजेक्टर को ऑन करती हैं. हैव यू सीन इट? यस, दैट इज़ अ प्रोजेक्टर. उसका काम क्या है? अ प्रोजेक्टर डिस्प्लेज वीडियोज, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन अ बिग स्क्रीन सो दैट मैनी पीपल कैन वॉच इट. ओके, इसका काम है प्रोजेक्ट करना, डिस्प्ले करना इमेजेस को, पिक्चर्स को, डॉक्यूमेंट्स को ऑन अ बिग स्क्रीन. So we have learnt about 4 output devices. The first one is monitor, speaker, printer and projector. So these are the 4 output devices. And what are the function of output devices? To receive information from the computer. Let's start our next topic, that is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is neither an output device nor an input device. It controls all the input and output devices connected to it. A device has to be connected to the CPU to send or receive information. The CPU takes the information given by the input devices, processes it and sends the result to the output devices. So this is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. You must have learned, and it is also called the brain of the computer. And इसका काम क्या है? What is its function? It controls all the input and output devices. अभी हमने input and output devices के बारे में पढ़ा. उन्हें control कौन करता है? CPU. Okay, now the CPU takes information given by the input device. Input devices information send करती हैं. CPU उन्हें उस information को लेता है, उस information को process करता है और उसको send करता है, उसके result send करता है to the output devices. Okay, now the CPU consists of the following 3 main parts. अब CPU के 3 main parts हम पढ़ेंगे. Okay, the first one is control unit, CU. It controls the working of all the parts of a computer. It acts like a supervisor and decides if a particular instruction will go to the memory unit, the ALU or an output device. So
इट कंट्रोल्स, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, आपको नाम से पता लग रहा होगा, कंट्रोल यूनिट का काम है टू कंट्रोल ऑल द फंक्शनिंग, ऑल द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के वर्किंग को कंट्रोल करना। और इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर की तरह काम करता है, चेक करता है, डिसाइड करता है कि कोई हमें इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट को देनी है या नहीं देनी, एएलयू को देनी है कि नहीं देनी, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या आउटपुट डिवाइस को कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देनी है कि नहीं देनी, ये सब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। द नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। It does all the calculations in a computer. It performs arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, logical operations such as less than, greater than, etc. ओके, अभी हम कंप्यूटर में कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या कंपैरिजन करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, तो कंप्यूटर ये कैसे काम करता है, आंसर कैसे देता है कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। तो ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ALU, इट डज ऑल द कैलकुलेशंस, इस कंप्यूटर में हो रहे सारे कैलकुलेशंस को करता है, उनका आंसर देता है। द नेक्स्ट वन इज मेमोरी यूनिट। इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इनपुट डिवाइसेस बिफोर दे आर सेंट फॉर प्रोसेसिंग। इट ऑल्सो स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ और द आउटपुट बिफोर इट इज सेंट टू द यूजर। ओके, सो इनपुट डिवाइसेस इंस्ट्रक्शंस और जो डेटा है वो सेंड करती हैं टू द कंप्यूटर। नाउ मेमोरी यूनिट का काम क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइसेस देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर लेना। देन द रिजल्ट गिवन बाय द आउटपुट डिवाइसेस इज ऑल्सो स्टोर्ड बाय द मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में यानी कि सब स्टोर हो जाता है मेमोरी में सब स्टोर हो जाता है, फ़ोन की मेमोरी में सब स्टोर हो जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट में, CPU के मेमोरी यूनिट में सब कुछ स्टोर हो जाता है, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इनपुट डिवाइसेस एंड द रिजल्ट given by the output devices. Everything gets stored in memory unit. Let's move ahead. Now here you can see one cycle. This is called IPO cycle. IPO cycle means input process output cycle of the computer. Input process output cycle of the computer. The input devices, output devices and the CPU of a computer work together to execute the instructions given to it. This is called the IPO cycle. Okay, so अभी हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा एंड CPU के बारे में पढ़ा। ये तीनों अच्छे से काम करते हैं फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर सारा काम सही से कर पाए। सो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड CPU वर्क टुगेदर. Now you can see in the first box it is written input device. So input devices are sending information to the computer. Then the information is getting processed. Information क्या होती है? Processed होती है by the CPU. In the middle you can see CPU. CPU क्या काम करता है? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और CPU में कौन से 3 मेन पार्ट्स होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। सो मेमोरी यूनिट में सब कुछ स्टोर हो जाता है, कंट्रोल यूनिट सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सारे कैलकुलेशंस करता है। तो ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ CPU. नाउ आफ्टर द प्रोसेसिंग इज डन, द रिजल्ट is given to the output devices by the CPU. जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है वो कहाँ जाती है? टू दी आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस से यूज़र, जो यूज़र होते हैं, हम यूज़र हैं, हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को और हमें वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस से मिल जाती है। सो दिस इज IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल ऑफ द कंप्यूटर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइसेस. वी विल read the third part. We will read about storage devices and the third and the last part of this chapter in the next session. The homework is read the chapter till where we have read it today as many times as you can and try to learn and understand it. I'll see you in the next class very soon. Till then, bye bye and take care.